Hey everyone, I welcome you in Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms. This series is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. See, the first word is fishy. Fishy मतलब जो चीज़ क्या है जिसमें डाउट है. It is an adjective because it is showing the quality. ठीक है. So the matter which you doubt upon is known as fishy. All right, doubtful, suspicious, and dubious. All right, so opposite would be truthful and it is above board. ठीक है, truthful and above board. ये क्या है, ऑपोजिट है किसका, फिशी का. फिशी इज लाइक डाउटफुल. ऑलराइट, सो डाउटफुल का ऑपोजिट क्या जाएगा, ट्रस्टफुल एंड ट्रुथफुल. ऑलराइट, लेट्स सी द एग्जांपल. आई एम कन्विंस देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन. ठीक है, you could say actually I know there is something fishy, something doubtful is going on. Alright, next word is naughty. Naughty here means ट्रबलसम, डिस्टर्बेंस. ठीक है, परप्लेक्सिंग मतलब ये था कन्फ्यूजिंग. ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स. ऑलराइट, एंड मिस्ट्रीफाइंग कि उसमें क्या है, कुछ है मिस्ट्री, रहस्य छुपा हुआ है. वो क्या है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है और सिचुएशन है. सो ऑपोजिट वुड बी ईजी एंड फैसाइल, वेरी ईजी गोइंग. ठीक है, सिंपल यू कैन से. ऑलराइट, said example, it was his naughty idea means it was his troublesome idea. Alright, moving to our next word, it is knave. Knave मतलब होता है fraud. कोई चीज़ कोई चीज़ क्या करना, fraud से होना. ठीक है, rob and miscreant. कोई चीज़ क्या है, fraud है, you can't trust upon, rely upon that, उसमें क्या बोलते हैं, knave बोलते हैं. So opposite would be angel and hero means these are the positive word. ठीक है, opposite of fraud would be hero and angel. Now let's see the example. He is known as a notorious knave of this area means he is known as the fraud knave of his notorious fraud of this area. All right, so the next word is ludicrous. Ludicrous means absurd. Absurd मतलब कोई ऊट पटांग चीज़ें बोल देना. ठीक है, बिजायर जिसका कोई रिजल्ट नहीं है. राइट, कॉमिकल वे में कहना. ऑल राइट, सो ऑपोजिट वर्ड भी ऑर्डिनरी, नॉर्मल, एज यूजल. ठीक है, ये क्या है, ऑपोजिट हैं किसके, बिजायर, कॉमिकल और एब्सर्ड के. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ इट इज it was a ludicrous sentence made by him means it was a absurd sentence what he made. All right, so the next word is kudos. Kudos मतलब होता है praise someone. ठीक है, किसी की प्रशंसा करना. it is a noun which means praising someone, extreme build up करना. ठीक है, किसी को क्या करना, applaud करना. ठीक है, so opposite would be dishonor and denunciation. What are these are that you just demotivate the person, you don't give courage to the person means you dishonor that person, and denunciation. All right, next word, let's see the sentence. When the football team won the state championship, they were given kudos during a celebratory pep rally means they were given praise like okay you can do it, right, like this. सो द नेक्स्ट वर्ड इज जॉल्ट. जॉल्ट मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना. ठीक है, कन्वर्स करना, कन्वल्सन से रिलेटेड, उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है, तो वैसे ही क्या है, डिस्टर्ब होना. सो ऑपोजिट वुड बी काम एंड कम्फर्ट, नो डिस्टर्बेंस, नो कन्वर्सन्स. ऑल राइट, सेंटेंस वुड बी his statement jolted me in my mind means his statement disturbed me in my mind. All right, so the next word is verbose. Verbose मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बोलने वालों को क्या बोलते हैं, verbose. एक verb होता है ना, verb से ही बना हुआ क्या है, verbose. All right, जिनके बाद बहुत बोलने को होता है, बहुत words होते हैं, gabby होते हैं. All right, it is circumlocutory होते हैं, कहीं की भी बात कैसे भी बोल देते हैं. All right, and so opposite would be इट इज़ कंसाइज, जितना है अप्रोप्रिएट उतना बोलना, जितना ज़रूरत है उतना बोलना. ऑल राइट, एंड नेक्स्ट इज सुसीनिएट.
ठीक है, it is succinct. Alright, so the example would be he is a verbose man. What is it? He is a verbose man means he is a wordy man. So next word is heretic. Heretic means क्या होता है? charismatic. ठीक है, it is charismatic. कोई चीज़ क्या है? You don't follow some beliefs, ठीक है, some school of thoughts. It is known as heretic. So opposite would be believer and follower. ठीक है, so the sentence would be as a relapsed heretic he was left to the secular arm means as a relapsed, ठीक है, as a relapsed non-believer he was left to the secular arm. alright, so the next word is covert. covert मतलब कोई चीज़ छिपी हुई है. observe को हम overt बोलते हैं, जो चीज़ हमें दिख नहीं पाती है उसे हम covert बोलते हैं, मतलब hidden. ठीक है, it is also an adjective which means undercover and secret. So the sentence would be behind his soft behavior he has some covert intentions means behind his soft behavior he has some hidden intentions. alright, so the next word is defile. defile is a verb which means कोई चीज़ क्या है? corrupt हो गई है, degrade हो गई है, ठीक है, और discreet हो गई है. defile मतलब कोई चीज़, defile is defiled noun, corrupt noun, ठीक है, degrade हो गई है, discreet हो गई है. राइट, सो ऑपोजिट वुड बी ऑनर, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी को प्रेज करना. राइट, so the example would be he tried to defile the system means he tried to corrupt the system. alright, this is all for today. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you, keep learning, be safe and Jai Hind.